Hello बच्चों, let's read this question. Select the correct statement. Rate constant are never negative. Partial orders are never negative. Molecularity and order of reaction both are equal for elementary reactions. Order of reaction may be changed with change in practical conditions, temperature and pressure. So in this question जो हमारे पास key concept है, key concept of this reaction is order of reaction. It is order of reaction. And let us see order of reaction क्या represent करता है. Basically it represents the dependence of rate with respect to the concentration of the reactants. So we can write it is the power dependence of rate on concentration of all the reactants. एंड जो हमारे पास ऑर्डर होता है रिएक्शंस का दैट कैन बी ज़ीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर. समटाइम्स जो हमारे पास ऑर्डर होता है वो नेगेटिव में भी आता है और फ्रैक्शन में भी आता है. सो फॉर दिस वी कैन कंसीडर फर्स्ट ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. सो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है फॉर दैट जो रेट होता है दैट इज इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर ज़ीरो, which shows जो rate है that is independent of the concentration, hence named it as zero order reaction. And the same way अगर हमारे पास first order reaction होगा that can be written as concentration raised to power 1, and it shows the linear dependency of the rate with respect to the concentration of the reactant. So rate जो है directly proportional है concentration के. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट हुआ. द सेम वे सेकेंड ऑर्डर होगा तो इट विल बी कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर 2, विच मीन्स अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को 2 टाइम्स करेंगे तो रेट विल बी 4 टाइम्स, कॉन्सेंट्रेशन को 3 टाइम्स करेंगे तो रेट विल बी 9 टाइम्स. सो इट इज फॉर द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. नाउ लेट अस कम टू द स्टेटमेंट्स. जो हमें 4 स्टेटमेंट गिवन है इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है बेसिकली. एंड जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इट सेज रेट कांस्टेंट्स आर नेवर नेगेटिव. जो यहाँ पर k रिप्रेजेंट किया हुआ है दिस इज द रेट कांस्टेंट एंड दीज आर नेवर नेगेटिव. ये कभी नेगेटिव नहीं होते हैं बिकॉज जो हम रेट लिखते हैं that is equal to the change of concentration with respect to time. Concentration with respect to time. And generally rate law के according rate is directly proportional to the concentration raised to power n. और जब हम proportionality का साइन हटाते हैं then rate constant इंट्रोड्यूस होता है. n represents the order of reaction and this rate are or rate constant are never negative. This is the correct statement, hence option A is the correct. Now let us see other option. जो option B given है it says partial orders are never negative. For this we should know partial orders क्या होते हैं. एक होता है हमारे पास ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन और एक होता है पार्शियल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. एंड जो पार्शियल ऑर्डर है वो बताता है कि पर्टिकुलर जो रिएक्टेंट है उसके विद रिस्पेक्ट में लेट अस सपोज A प्लस B गिव C प्लस B. अगर हमारे पास ये रिएक्शन है सो ओवरऑल रिएक्शन के लिए ऑर्डर हम कहते हैं कि सेकंड है, इज सेकंड. एंड अगर हमें ऑर्डर निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ए ओनली तो वो पार्शियल ऑर्डर होगा, दैट विल बी दी
partial order. So by this we can say partial order is the order of reaction with respect to particular reactant. एंड जो हमारे पास पार्शियल ऑर्डर होता है डेट कैन बी नेगेटिव, वो नेगेटिव होता है एंड फॉर विच द एग्जांपल इज टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन जो है लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन. दिस इज द एग्जांपल फॉर द नेगेटिव पार्शियल ऑर्डर. सो बाय दिस वी कैन से जो हमारे पास ऑप्शन और स्टेटमेंट भी गिवन है partial orders are never negative, this is wrong. So let us move to the C1 which says molecularity and order of reaction both are equal for elementary reaction. And जो molecularity है that represent कि कितने number of molecules react किए हैं हमारे पास reactant में in the reaction. It is number of molecules of reactants involved in the reaction. Involved in the reaction. And जो molecularity है that we check for the elementary reaction. And elementary reaction होते हैं single step reaction. Elementary जो reaction होते हैं that will be single step reaction. And जो molecularity है और order है सिंगल स्टेप रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हमेशा सेम होता है. लेट अस से हमारे पास रिएक्शन है A gives B plus C एंड ऑर्डर होगा हमारे पास जो हमारे पास A का कॉन्सेंट्रेशन है उसके साथ जो कॉफिशिएंट होगा उसका जो हम लोग रेट लिखेंगे डेट विल बी इक्वल्स टू द K concentration raised to power n and this n is जो हमारे पास A के साथ कॉफिशिएंट होगा 1 है so it will be 1 and this represent the order of reaction. So ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. एंड हम देख सकते हैं जो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट है पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए दैट इज आल्सो वन काइंड ऑफ रिएक्टेंट. सो जो मॉलिक्यूलरिटी होगा दैट विल बी आल्सो 1. सो जो हमारे पास सी स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट. एंड डी सेज ऑर्डर ऑफ इट विल बी order of reaction may be changed with change in practical condition, temperature and pressure. And we have seen जो हमारे पास order of reaction है that depends on the concentration and concentration terms जो है depend करती है temperature and pressure पर. So temperature and pressure vary करने पर concentration change होती है तो हमारे पास order of reaction में भी effect होता है. So by this we can say जो हमारे पास A, C and D given statement है these are the correct one. So हमारा आंसर हो जाएगा A, C and D. So these are the correct statement. Hope you understood it well. Best of luck.